In descriptive epidemiology, we describe the disease in terms of time, place, and person. So let's see the time distribution or the time trends. Time distribution or time trends can be of different types. Short-term fluctuation, long-term fluctuation, periodic fluctuation. The time distribution or the time trends can be of three types: short-term fluctuation or short-term trends, long-term fluctuation or long-term trends, and periodic fluctuations or periodic trends. The periodic fluctuations are further divided into cyclic trends and seasonal trends. Time distribution can be short term, long term, or periodic fluctuations. Let's see the short term fluctuations. The short term fluctuations are also known as outbreaks or epidemics. The short term fluctuations are also known as outbreaks or epidemics. Outbreaks are smaller and they are distributed to regional areas. The outbreak is limited to a small and regional area. Epidemic means a sudden rise in the number of cases. Epidemic means a sudden rise in the number of cases which can be greater than 80% of the expected frequency or greater than 2 standard deviation. The short-term fluctuations are known as outbreaks or epidemics. Outbreaks are limited to smaller and regional areas. The outbreaks are limited to smaller and regional areas. Epidemic means a sudden rise in the number of cases. For defining epidemic we have two criteria: either greater than 80% increase of the expected frequency, greater than 80% of the expected frequency, or greater than 2 standard deviation. Short term fluctuations are also known as outbreaks or epidemics. Outbreaks are limited to a smaller regional area. Epidemic means sudden rise in the number of cases which is either greater than 80% of the expected frequency or greater than 2 standard deviation. सी एपिडेमिक को डिफाइन करने के लिए दो क्राइटेरिया है, या तो इधर ग्रेटर देन 80% ऑफ द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी या ग्रेटर देन 2 स्टैंडर्ड डिविएशन. मानो किसी भी सिटी में नॉर्मली 500 केसेस होते हैं, ठीक है, तो 500 का 80% कितना हुआ? 80% ऑफ 500 is 400. So if in a particular year there is 500 plus 400, that is greater than equal to 900 cases, then that will be known as epidemic. ठीक है. So किसी भी कंट्री में, किसी भी सिटी में नॉर्मली 500 केसेस पर ईयर देखने को मिलते हैं. किसी एक ईयर में इफ़ देयर इज़ greater than 900 cases, that is 500 plus 80% of the 500, then that is known as epidemic. तो epidemic का पहला क्राइटेरिया क्या है? greater than 80% of the expected frequency. एंड दूसरा क्राइटेरिया है greater than 2 standard deviation. ठीक है, तो एपिडेमिक को डिफाइन करने के लिए दो क्राइटेरियाज है: greater than 80% of the expected frequency या greater than 2 standard deviation. Greater than 2 standard deviation या greater than 80% of the expected frequencies. Then the short term trends could be broadly of two types. Number one, common source or propagated epidemic. The short term fluctuations, the short term trends can be of two types. Broadly of two types, that is common source or point source and propagated epidemic. Common source या point source can be classified further into two types. One is SEPS and another is MEPS. SEPS stands for single exposure point source. MEPS stands for multiple exposure point source. And second is propagated epidemic. जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड्स है वो दो टाइप का होता है, या तो कॉमन सोर्स या प्रोपगेटेड एपिडेमिक. जो कॉमन सोर्स है दैट कैन बी ऑफ टू टाइप्स.
Common source can be of two types, either SEPs or MEPs. ठीक है, कॉमन सोर्स या पॉइंट सोर्स एपिडेमिक इज ऑफ टू टाइप, सेप्स दैट इज सिंगल एक्सपोजर पॉइंट सोर्स, MEPs दैट इज मल्टीपल एक्सपोजर पॉइंट सोर्स, एंड द सेकेंड टाइप इज प्रोपगेटेड एपिडेमिक. कॉमन सोर्स या पॉइंट सोर्स में देयर इज नो पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन, एंड प्रोपगेटेड एपिडेमिक इज कॉल्ड सो बिकॉज हियर पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन इज देयर. ठीक है, कॉमन सोर्स या पॉइंट सोर्स में एक सोर्स ही होता है and there is no person to person transmission. Propagated epidemic में there is person to person propagation. And common source epidemic is of two type, single exposure point source or multiple exposure point source. First is single exposure point source or SEPs, single exposure epidemic. Here all the cases occur within one incubation period after a single exposure. Single exposure में सिर्फ एक exposure होगा और जितने भी cases हैं वो एक incubation period में हो जाएंगे. All the cases occur within one incubation period after a single exposure. में सिर्फ एक बार exposure होता है और उस exposure के बाद जितने भी disease हैं वो एक ही incubation period में होंगे. The average incubation period corresponds to the median incubation period, and the average incubation period will correspond to the median incubation period. There is a rise in the number of cases followed by a fall. तो single exposure epidemic का जो ग्राफ है वो ऐसा होता है, बेल शेप्ड होता है. तो देर इज़ अ राइज एंड देन देर इज़ अ फॉल टू. तो सिंगल एक्सपोजर में एक्सपोजर होता है, दिस corresponds to the average incubation period, और उसके बाद there is a fall in the number of cases. ठीक है, सिंगल एक्सपोजर में there is a rise and then उसके बाद there is a fall. ठीक है, और ये सब एक incubation period में हो जाता है. This corresponds to the average incubation period. So there is a rise in the number of cases followed by a fall, and here only one wave is seen. ठीक है, दैट इज़ द प्राइमरी वेव. सिर्फ एक वेव होता है, दैट इज़ द प्राइमरी वेव, एंड रिटर्न ऑफ केसेस विल बी अराउंड वन इंक्यूबेशन पीरियड. द रिटर्न ऑफ द केसेस वो नॉर्मल फॉल हो जाता है विद इन वन इंक्यूबेशन पीरियड. नंबर ऑफ केसेस फॉल एंड द रिटर्न ऑफ केसेस विल बी अराउंड वन इंक्यूबेशन पीरियड. इसका एग्जाम्पल क्या है? एवरी वन गोइंग टू अ पार्टी डेवलप्स डायरिया बिकॉज ऑफ फूड पॉइजनिंग. तो यहाँ पे एक सोर्स ही था, एक टाइम ही एक्सपोजर हुआ है. एवरी वन गोइंग टू अ पर्टिकुलर पार्टी एट अ नाइट विल डेवलप अ डायरिया. क्या? तो ये जो पार्टी था ये एक बार हुआ है, दिस इज सिंगल एक्सपोजर, एंड देन ऑल पीपल विल डेवलप द डिजीज विद इन वन इंक्यूबेशन पीरियड. ठीक है, उसके बाद देयर विल बी अ राइज इन द नंबर ऑफ केसेस एंड आफ्टर सम टाइम देयर विल बी अ फॉल, एंड दिस रिटर्न ऑफ केस विल बी अराउंड वन इंक्यूबेशन पीरियड. सिंगल एक्सपोजर एपिडेमिक का एग्जाम्पल हो गया, एवरी वन गोइंग टू अ पार्टी विल डेवलप डायरिया बिकॉज ऑफ अ फूड पॉइजनिंग. ठीक है, तो इसमें क्या होगा? देयर विल बी अ राइज इन द नंबर ऑफ केसेस and then there will be a fall of the cases, and all these occur within one incubation period, and the average incubation period corresponds to the median incubation period. The return of the cases will be around one incubation period, और यहाँ पे सिर्फ एक वेव होता है, दैट इज़ द प्राइमरी वेव. ठीक है, बिकॉज बस एक टाइम एक्सपोजर हुआ है, देयर इज़ ओनली सिंगल एक्सपोजर. द नेक्स्ट इज मल्टीपल एक्सपोजर एपिडेमिक. मल्टीपल एक्सपोजर एपिडेमिक और MEPs, मल्टीपल एक्सपोजर फ्रॉम द पॉइंट सोर्स. सोर्स एक ही है बट उसी सोर्स से मल्टीपल एक्सपोजर हो रहा है. मल्टीपल एक्सपोजर एपिडेमिक इज़ अ टाइप ऑफ पॉइंट सोर्स एपिडेमिक. So the source is same, the source is common, but there is multiple exposure from the same source. And here also there will be no person to person transmission. Person to person transmission होता है propagated epidemic में. Point source में there is no person to person transmission, but there will be multiple exposure from the same source, from the point source. And here the cases occur at greater than one incubation period.
ठीक है, बिकॉज यहाँ पे मल्टीपल एक्सपोजर हो रहा है, द पीपल आर एक्सपोज्ड एट डिफरेंट टाइम्स, सो द केसेस विल ऑकर एट ग्रेटर देन 1 incubation period. Here there will be a rise in the number of cases, but there will be no fall, that is the cases will remain persistent. ठीक है, there will be a rise in the case but there will be no fall, the cases will remain persistent, and this state is known as hyperendemic state. Hyperendemic state means there is rise in the number of cases but there is no fall, that is the number of cases will be persistent because of multiple exposure. And here secondary waves are also seen. Single exposure point source में there was no secondary wave, वहाँ पे बस primary wave था. MEPS में secondary waves is also seen. Example, disease exposure from a contaminated well. अगर एक कॉन्टामिनेटेड वेल है तो उसे जब भी कोई भी पानी पिएगा दैट पर्सन विल बी एक्सपोज्ड. ठीक है, एक कॉन्टामिनेटेड वेल है तो इससे जब भी कोई पानी पिएगा तो ही विल बी एक्सपोज्ड टू द डिजीज़. सो मल्टीपल एक्सपोजर एपिडेमिक में सोर्स एक ही है, दैट इज़ द कॉन्टामिनेटेड वेल, बट उस कॉन्टामिनेटेड वेल से मल्टीपल एक्सपोजर्स हो रहे हैं, और मल्टीपल एक्सपोजर हो रहे हैं डिफरेंट टाइप पे, डिफरेंट टाइम पे होगा एक्सपोजर. आज हुआ, कल हुआ, परसों किसी ने उस वेल से पानी पिया. सो द केसेस विल ऑकर एट ग्रेटर देन 1 incubation period. There is a rise in the number of cases but there is no fall, that is the cases will remain persistent. This is known as hyperendemic state. ठीक है, there will be a rise in the number of cases but then it will remain persistent. This is known as hyperendemic state. And here secondary waves are also seen. Example, disease exposure from a contaminated well. ठीक है, contaminated well is a point source but इससे multiple exposure होगा. ठीक है, so that's why it is known as multiple exposure epidemic. And here the cases will occur at greater than 1 incubation period. There will be a rise in the number of cases but then there will be no fall, the cases will remain persistent. This is known as hyperendemic state. And here secondary waves are also seen because of the multiple exposure. Example, drinking water from a contaminated well. Then propagated epidemic. Propagated epidemic में there is person to person transmission. Propagated epidemic means एक पर्सन है, एक पर्सन से कुछ पर्सन्स को डिजीज़ फैला, फिर इन पर्सन से और पर्सन्स को डिजीज़ फैल रहा है, इन पर्सन से और पर्सन्स को डिजीज़ फैल रहा है. ठीक है, सो दिस इज़ द प्रोपगेटेड एपिडेमिक. द ग्राफ फॉर प्रोपगेटेड एपिडेमिक इज़ लाइक दिस. ठीक है, प्रोपगेटेड एपिडेमिक में देयर इज़ पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन. There is exponential increase in the number of cases because of person to person transmission. There will be abrupt rise in the number of cases or outbreak. Propagated epidemic में there is exponential increase in the number of cases. Propagated epidemic में there is exponential increase in the number of cases because there is person to person transmission. यहाँ पे भी cases will occur at greater than 1 incubation period. Here also secondary waves are seen. ठीक है, example, COVID epidemic. COVID epidemic was an example of propagated epidemic क्योंकि एक इंसान से कुछ इंसान को हो रहा, कुछ इंसानों को हो रहा था, फिर उन कुछ इंसान से और इंसान को होगा. ठीक है, so there will be exponential rise in the number of cases. There is exponential increase in the number of cases. There is an abrupt rise in the number of cases because of person to person transmission. Secondary waves will be seen. Cases occur at greater than 1 incubation period. And then there is the decline in cases will be either because of herd immunity or if the susceptible population is unavailable because of vaccination और डिक्रीज्ड डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन. ठीक है, तो प्रोपगेटेड एपिडेमिक के केसेस में डिक्लाइन का 3 रीजंस हो सकता है, या तो हर्ड इम्यूनिटी या वैक्सीनेशन. वैक्सीनेशन के कारण देयर विल बी नो मोर ससेप्टेबल पॉपुलेशन बिकॉज दे हैव बीन वैक्सीनेटेड, और इफ द पॉपुलेशन डेंसिटी हैज़ रिड्यूस्ड
then there will be no one to get the infection. So इस case में भी the number of cases will decline. Decline in cases can be because of herd immunity, because of vaccination. Vaccination के कारण no more susceptible individual will be available, or because of decreased density of population. So propagated epidemic example, COVID epidemic. Here there is person to person transmission, there is exponential increase in the number of cases, there is abrupt rise in the number of cases, it occurs at greater than one incubation period, secondary waves are seen, the decline in cases are seen with herd immunity, vaccination, or if the population density is reduced. Now let's see what is herd immunity. Herd immunity is an indirect protection from the infection. Herd immunity is indirect protection from infectious disease when a large percentage of the populations become immune either through vaccination or because of previous infection. हर्ड इम्यूनिटी, अगर एक पॉपुलेशन का लार्ज अमाउंट में वो इन्फेक्शन हो चुका है, ठीक है, तो दे विल डेवलप सेकेंडरी इम्यूनिटी टू इट, ठीक है, प्रीवियस इन्फेक्शन के कारण अ लार्ज अमाउंट ऑफ द पॉपुलेशन विल डेवलप सेकेंडरी इम्यूनिटी, ठीक है, या वैक्सीनेशन के कारण इम्यूनिटी कैन बी डेवलप्ड, ठीक है, तो इसके कारण अ लार्ज परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशंस बिकम इम्यून. If a large percentage of population will become immune, there will be less chances of transmission, ठीक है, जिसके कारण उस डिजीज़ का जो चेन ऑफ ट्रांसमिशन है दैट विल ब्रेक. हर्ड इम्यूनिटी कैसे हो सकता है? हर्ड इम्यूनिटी मीन्स अ लार्ज परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन विल एक्वायर द इम्यूनिटी either through previous infection or because of vaccination. So because a large percentage of the population has acquired the immunity, the chain of transmission will break. The number of susceptible individuals will decrease there, and thus herd immunity is there. So decline in cases can be because of herd immunity, vaccination, or decrease in the population density. Example of propagated epidemic is COVID epidemic. Here person to person transmission is there. Cases occur at greater than one incubation period. There is exponential increase in the number of cases and secondary waves are seen. So मल्टीपल एक्सपोजर पॉइंट सोर्स और प्रोपगेटेड एपिडेमिक में 2 पॉइंट कॉमन है. केसेस ऑकर एट ग्रेटर देन वन इंक्यूबेशन पीरियड एंड सेकेंडरी वेव्स सीन. मल्टीपल एक्सपोजर एपिडेमिक में भी केसेस ऑकर एट ग्रेटर देन वन इंक्यूबेशन पीरियड एंड सेकेंडरी वेव्स आर सीन. Let's see the graph for single exposure point source. Single exposure point source में there is a rise in the cases, then there is a fall in the cases. Multiple exposure point source में there is a rise in the cases, then the case persists. This is known as hyperendemic state. Multiple exposure point source में there is hyperendemic state. There is gradual increase in the cases and the number of cases then persist. Propagated epidemic में there is exponential rise in the number of cases. There is abrupt rise in the number of cases in case of propagated epidemic. So these are example of short-term fluctuations. SEPs, MEPs and propagated epidemic are example of short-term fluctuations or short-term trends.